ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਕੋਲੇਪਾਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਸ ਟਰੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ होगी। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमन कोलेपारा का। वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्ते हरप्रीत जी। नमस्ते जी, वेलकम। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब पीस ट्री ये आपने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है ये है क्या और इसका मकसद क्या है? So Peace Tree is a non-profit organization that we created, and I'll go back a little bit about the history also. जी. For basically bringing awareness into community about wellness and oneness. Okay. Personal wellness, right? हम कैसे हमारे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, मेकिंग श्योर वी टेक केयर ऑफ आवर डे टू डे हेल्थ, राइट? एंड देन हाउ वी कैन ब्रिंग ग्लोबल वननेस दैट वी आर एक्चुअली वन. बट we can speak about that at an abstract philosophical level, but on a day-to-day practical basis, how can you achieve those two? That is the vision of organization. But if I take back a little bit in time about why we started this organization. So 10 साल के पहले मैं भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस, वरीज, एंग्जाइटीज, I was going through all of this, which is quite normal, right? Physical illness start हुआ था, mental tension था, emotional challenges था, relationship challenges था, ये सब हो रहा था लाइफ में. So at that time मैं एक आदमी को मिला यहाँ पे, उसका नाम है सुनीता बापू जी. वो योगा मेडिटेशन टीचर है. मैं सोचा कि चलो नॉर्मल योगा मेडिटेशन सिखा रहे होगा बोल के मैं क्लास लेने के लिए गया. So after I went there, I realized that it is yoga meditation, but it is not yoga meditation too. What she has done is, she has taken the extract of all this ancient wisdom, जो है, उसको लेके a modern hectic lifestyle के लिए बनाया. So उसको प्रोग्राम को बोलते हैं सूक्ष्मा. Sukshma is a word from Sanskrit language, it means microcosm. So the essence of Sukshma is how to take care of this mind and body. Right. See, we have these two amazing tools that we can use in our day-to-day life, mind and body. And Sukshma ka essence kya hai ki every day in 20 minutes in the morning, how can you recharge yourself? How can you rejuvenate yourself? How can you reignite and get ready for the day? See, this is a simple analogy मैं देता हूँ. Right. अगर आप सर्जरी का देखा तो लाइक सर्जन कैसे परफॉर्म करते हैं सर्जरी, उसको जो टूल्स है, राइट, फोर्सेप्स, सिजर्स, नाइफ, वो सब वो प्रिपेयर करते हैं इस्तेमाल करने के लिए सर्जरी पे. वो क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, राइट, एवरीथिंग इज सेट एंड देन ही यूजेस. आफ्टर यूजिंग इट, इस्तेमाल करने के बाद अगेन उसको क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन. Similarly, we have these two great tools, mind and body. How can we clean them every day? How can we purify them every day and make them ready, just like a warrior prepares his ammunition? Same thing. That's wonderful. So that's what Sukshma program is. Okay. So after taking inspiration from that, I have seen so many changes happening in my own life, my physical, mental, emotional changes that happened, and many more people. I was so inspired. I said, oh, let's start something so that we can take this knowledge and information and also practical tools to the community. And that's where Peace Tree came into existence with people like me and other students who have come to Sunita ji. Oh, that's wonderful. That's really interesting. बात करते हैं वेलनेस की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सेहत की तरफ से हम बहुत डाउन जा रहे हैं. करेक्ट. मानसिक तौर पे जैसे आपने कहा, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसके बाद काम का प्रेशर है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली वी आर गोइंग डाउन. सो व्हेन यू से कि रीजुवेनेट योरसेल्फ और अपने आप को रीइग्नाइट करना, जब कुछ सुनते हैं एक व्यक्ति इंस्पायर हो जाता है, पर उसको कंटिन्यू करना कई बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज विद द पेस ऑफ टाइम आपकी हेक्टिक लाइफ है, उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कि आप इन चीज़ों को इकट्ठा करके आगे कर सकें. तो उसके बारे में सुमन जी बताइए हमें कि let's talk about basic things, wellness as such. When you focus on wellness, let's start from wellness and then we'll go to oneness. Because wellness नहीं होगी तो oneness नहीं आएगी. Correct. तो wellness के लिए रोज़ सुबह उठ के हर एक व्यक्ति उठता है, लेकिन जब उठता है थका हुआ है, मानसिक तौर पे परेशान है कि भाई आज मेरा सारा दिन मैंने ये करना है, कई काम होते नहीं हैं, अधूरे रह जाते हैं और फिर टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है. So how to take on life when it comes to you
what would your recommendation would be? Absolutely. No, we brought a very interesting point. बहुत अच्छा point बताया आपने. हम इंस्पिरेशन लेक्चर सुनते हैं, बहुत बुक्स सारे बुक्स पढ़ते हैं, राइट, बट लेकिन प्रैक्टिस करने के टाइम पे इंस्पायर नहीं होते हैं हमको वो एनर्जी नहीं मिलता है, राइट. सो इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन पीसली में क्या कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी में जा रहे हैं. नॉट ओनली वी आर गिविंग द नॉलेज, बिकॉज आवर अंडरलाइंग कैप्शन इज एजुकेट, एक्सपीरियंस एंड एनलाइटन. फर्स्ट गिव देम द नॉलेज. पहले प्रॉब्लम क्या है कि हमको कोई हमारे बारे में बताए नहीं, हमारे मन कैसा है, हमारा शरीर क्या है, इस नॉलेज को हम कहीं पे एक्वायर नहीं किया. सो फर्स्ट गिविंग दैट नॉलेज. व्हेन आई सिट विद दिस पीपल एवरी वीकेंड, आई एम डूइंग दिस सेशंस आउट देयर. नॉर्मल पीपल, लेमैन, यू नो, आउट देयर आर कमिंग टू दिस सेशंस, एंड व्हेन दे हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ओह माइंड, हमारे जो मन है, हमारे जो विचार है, वो हमारे रूट कॉज है सफरिंग के लिए, राइट. हमारे वो जो टेंशन जो है, एंग्जाइटी जो है, वो टायर्डनेस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो सब हमारे मन से स्टार्ट होते हैं. सो व्हेन आई एक्सप्लेन दैट, पीपल आर लाइक वाओ, सो दैट इज द रूट कॉज. एंड जो मन में जो विचार होते हैं वो शरीर पे इम्पैक्ट हो जाते हैं. सो माइंड एंड बॉडी आर वेरी टाइटली इंटीग्रेटेड. सो व्हेन यू गिव दिस नॉलेज, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Then the experience part, practicing it. So I help them practice this and then let them experience the outcome within 20-30 minutes. I say, okay, you have 20 minutes in a day, right? And let's take those 20 minutes and try this. So practicing those things with everyone helps them to experience what I'm experiencing. And from there, of course, you get enlightened. But so the question you asked us, so why do we go through this? Right? Why do we go through this stress? The root cause is the untrained wandering mind. हमारे जो मन है, कभी भी देखो आप, if you take a span of 10 minutes and experiment करो, it will not stay in the present. Either past or future. It will keep on going. The problem क्या है कि हम मन को कभी ट्रेनिंग नहीं किया. ठीक है. हम एजुकेशन के लिए बारे में ट्रेनिंग किया, जॉब मिलाने के लिए ट्रेनिंग किया, शादी करवाते, उसके बाद यू सेट अप योर फैमिली एंड यू जस्ट गो ऑन, राइट. बट यू हैव नेवर सैट इन अ ड्राइवर सीट. हु इज सिटिंग इन द ड्राइवर सीट? योर माइंड इज सिटिंग इन द ड्राइवर सीट and driving you, right. So if you see, just now I used a different perspective. I said your mind is driving you. Absolutely. So you are different from your mind, right. So what we are doing with this is we are shifting this focus and saying, hey, you have to be in the driver's seat, and your mind has to be sitting in the passenger seat. So उसके लिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए आज बहुत सारी टेक्निक्स का जिक्र होता है और मेडिटेशन एक मेजर फोर्स फ्रंट में आ रहा है. मेडिटेशन भी कई किस्म की हैं और आम व्यक्ति जो है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, अगेन उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. सो जब आप कहते हैं माइंड को स्टिल करना, माइंड वॉन्डर ना करे, माइंड फोकस रहे इन द प्रेजेंट, तो उसके लिए कोई टेक्निक्स हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. JP Transmissions ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਟੋਟਲ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ट्रांसमिशन रिपेयर, रीबिल्ड, ऑटोमैटिक ते स्टैंडर्ड क्लचेस, डिफरेंशियल, जनरल रिपेयर, हर किस्म ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ. 1 ਟਨ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਟਰੱਕ, ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਹੀਨੋ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੈਨਰ. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8951 152 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਬ ਮਹਿਲ ਸ਼ੰਭੂ 6045891217. मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर सुमन ते जी गलबात चल रही है किस तरीके नाल अस अपनी सेहत दे आप उस दे मालिक बन सकने आ इस बारे चर्चा हो रही है. वैलनेस ते वननेस किवें अपनी ज़िंदगी विच लाई जा सकती है. आओ कुछ होर इन्फॉर्मेशन लेने. सो बिफोर द ब्रेक लाइक आई आस्क्ड यू कि कैसे क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स आज जो अवेलेबल हैं उसके साथ कन्फ्यूजन आ जाती है. आप आते हैं कुछ कह जाते हैं, कोई और आता है कुछ और कह जाता है, कोई कहता है किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके आप सिर्फ ध्यान रखें, कोई कुछ कहता है. सो ये जो है आपका सिस्टम, इसमें आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं ताकि माइंड जो है वॉन्डर ना करे? Very good question. Actually, in fact, there is a lot of confusion out there. In fact, when I do these seminars and lectures on the weekends, people ask me, oh, meditation is about stopping the mind. I'm like, no, you can actually not stop the mind. It is not that easy. Right? So, meditation itself, if you look at it, the basic essence of meditation is to be in the moment, to be mindful about the present. Right? Whatever ways you achieve it, it's up to you. Of course, there are many techniques like you said. So, let's talk mindful of the present. What do you mean by this?
you're completely immersed in this present moment. Right. So you're not concerned about the future or the past. Yes. Okay. And like I said, 90% of the times our mind is wandering. Right. In fact, there is this Harvard psychologist, he's called happiness scientist. Ji. He says the nature of human mind is wandering mind. Okay. It will keep on wandering constantly, no matter what you're doing. 50% of the time, whether you're listening to music, whether you're driving, whether you're cooking, you can relate to this, right? Whatever we are doing, our mind is wandering. It's being pulled from so many directions. Right. So that is the nature of mind. But what we are trying to do with mindfulness or meditation is to be in this moment fully when you perform. That is number one step. Right? And the second important step that we can achieve through mindfulness and meditation process is self-awareness. Looking at yourself in a mirror and say, who am I? What are my strengths? What are my weaknesses? What are my positives? What are my negatives? Build on the positives, build on the strengths, and slowly let go of those weaknesses. So what Master Sunita has done with Sukshma program, you might be asking, okay, my God, now another program. The beauty of this is, it's very practical. The core essence is self-compassion. So what she says is, let's say you go with any kind of problem, relationship, marriage, workplace, tension, stress, anxiety. The first question she asks is, what are you doing for yourself? Are you taking care of yourself? Are you loving yourself? Are you being compassionate with yourself? So before actually meditating, starting meditation is not like something you walk into the room and you close your eyes and you can focus. No, the mind jo hai, wo bandar ke jaisa hai. It's like a monkey mind. And also an intoxicated elephant. It's very wild and powerful. So to tame it, it's not that easy. So what she has done is she has created some of these subtle physical exercises that you can quickly do in 5 minutes. Taking care of your body, massaging, taking care, tapping, and all of those simple exercises. And then simple breathing exercise. Of course, there is pranayama and all those complicated things, but simple breathing exercise that you can do in 3-4 minutes. And then going back and taking care of this precious resource. She always says, this is the most precious resource. Bring back your attention to this. All that we are doing is in meditation. First thing is being mindful. And then second, by doing that, you're shifting the attention from the situations, stress. Stress are always going to be there. In fact, it's going to get worse as we go in this fast-paced lifestyle, information bombarding from so many directions. So all that we are doing is just simply shifting and saying, oh, let me take care of this. Let me come back to this. So by taking care of physical, mental, emotional, and then coming back and reflecting yourself and saying, oh, who am I? Oh, these are my weaknesses. What vices do I have? Anger, greed, jealousy. Oh, slowly let go, let go, and let go. So that's basically the whole essence of meditation. Oh, that's wonderful. और जब ये चीज़ होगी मानसिक तौर के ऊपर हम ठीक रहेंगे तो definitely हमारी सेहत जो है वो भी ठीक होगी because mind and body is connected. That is what we say. Everything first comes in the mind and that is what is foreseen later on. Absolutely. जब oneness की बात करते हैं आज हम, क्योंकि एक इंसान जो है वो आप ही इतना टेंस है तो बाहरली दुनिया में कहाँ से पीस आएगा? So पीस ट्री का जो आपने विजन कहा कि oneness का कॉन्सेप्ट जो आप ला रहे हैं. So starting from one individual to the next, and this is how the message will spread. So what is your vision for oneness? How can that oneness be achieved? Beautiful, fantastic question. So the reason we don't experience, so why we don't experience oneness, so let's say you and me are here, right? Probably, if you look at us, we are pretty much similar human beings. The base material of us is the same. We are made with water, air, fire, earth, all these 5 elements, right? That is the basic foundation. That is what we are made up of. But the only difference that you and me have is the perspective. जो हम understand करते हैं बाहर के विषय पे, that is the only difference that we have. And that difference is only because of the mind and the emotions that are created by the mind. So if you go a little bit deeper into the scientific aspect is, each person is different because of the nature of the mind and the brain behind it. If you look at our brain, there are 3 brains in that. A lot of people don't realize that because we are product of evolution. So we started as a single cell organism, amoeba, and then we evolved over a period of time, bandar, hathi, and then eventually we became human beings. So what happens is in our brain, we have all the footprint of that evolution in us. So if you look at our brain like this, there are 3. The lower portion is called the reptilian brain. We still have that. And then the center portion, we have mammalian brain. That's called the limbic system. And the front portion of the brain, which is right behind the forehead, is called the frontal cortex. That's the mammalian brain. And depending on which part of the brain you're more active, that is how you respond. So let's say I react to certain things with you right away. You might get so upset and anger and you just want to go hit me.
That's the reptilian brain working, right? And then there are people who get very angry and upset because that's your emotional brain. And then there is a prefrontal cortex, which is a mammalian brain, which is center of self-awareness, self-regulation and decision making. So what we do through this process of sukshma awareness or mindfulness and meditation is, when you do this, they have actually, scientists have found that your awareness shifts slowly from your reptilian brain and to the prefrontal cortex. So they have actually found that prefrontal cortex is getting strengthened. So when your prefrontal cortex is getting strengthened, you are ready to listen, you are ready to understand the other person. You are open, your heart. Your perspective changes and you're willing to understand and take grasp into things. And then when you go inside, so when you, let's say if you close your eyes right now for a second, and I close my eyes, what do we see? Nothing. Emptiness. And when you go through this meditative process, what you're seeing is that nothingness. Then you realize, wow, I am actually, my true self is actually that calm, silent, nothing, peaceful self. And the same is with you. And when you start to close your eyes and reflect on yourself, that is exactly what you see, which is called pure awareness, or if you want to complicate it, pure consciousness. But at the end, it's that empty, silent nothingness. So then I realized, oh, Harpreet is the same. I am the same. So why there is anything? Everybody is the same. So right now, in fact, when I'm talking to you, my nervous system is connected to your nervous system. We are interacting with energy to energy. So it's basically the energy is what is the foundation of each and every one of us. This body is just separating us, that's all. In fact, there is also one more research that is being done in the last 10 years or so, called mirror neurons. Mirror neurons are there in every single individual. So when I'm speaking, the mirror neurons in your brain are actually activated, and they trigger a response in your system to do exactly what I am doing. So they want you to imitate what I am doing. The only reason that you do not imitate the movements of my hands and the talk is because your skin sends a signal back to your brain and says, hey, the signal is not from you, from the outside environment. Wow, that's really interesting what you are pointing out. और आने वाले programs में इन्हीं टॉपिक्स को लेके हम फोकस करके बात ज़रूर करेंगे. आपका धन्यवाद यहाँ पे आके आपने हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात की. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. प्लेजर. थैंक यू. सो जो ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਸ ਟਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਅਤੇ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ. ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਲੋਕ ਟੈਂਸ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਨਨੈਸ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਐਟ ਪੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ. ਇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏ. ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ.